I'm building Drishti AI for Vision Agent Hackathons. Drishti means vision in English. This project is literally about saving millions of people's lives. Vision. India has over 8 million blind people. This is the second highest in the world. Nearly 80% of Indian blindness is preventable or treatable. But most people do not get diagnosed in time. This is simply because no one came to check in time. Two-thirds of India lives in rural area. Most of them have never seen an ophthalmologist. The nearest eye hospital can be from 50 to 100 kilometers away, so they wait. But by the time they go to the hospital, the damage is already done. AI can now detect cataract glaucoma problems through phone camera. Gemini Live can hear, see and respond in real time, just like a real doctor on call. Drishti AI bundles this all together and shares to them who need it most. India has over 1 million Asha workers. They visit door to door every week. We give them an Android app and they register the family and points the camera to the eye of the patient. The agent screens the eye and tells whether the person needs a doctor to visit. Every eye screen done by Asha workers shows up here, the local healthcare admin dashboard. Doctor can see every case, every village, every severity level at a single place. No paperwork, no phone call, just the clean data whenever they need it. Under the food, flow models detect cataract, glaucoma and other eye disease. MeteorDrive handles eye landmark. Gemini handles live and vision interactions. All these together are bundled by vision agents. Grafana and Prometheus tracks everything so nothing goes unmonitored. And I'm talking. Now let me show you Drishti AI making a real live screen. It's actually happening. Okay, hello Drishti AI. हेलो दृष्टि एआई। मैं दृष्टि एआई हूँ, आपकी आंखों की जांच में मदद करूंगी। मैं पहले मरीज के बारे में कुछ नमस्ते दीदी, मैं दृष्टि एआई हूँ, आपकी आंखों की जांच में मदद करूंगी। मैं पहले मरीज के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी, फिर कैमरा से आंख देखूंगी। अगर आपको जवाब पता है तो बता दें, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चा छोटा है, मैं बच्चे के बारे में सवाल पूछूंगी। आप या माँ जवाब दे सकती हैं। चले शुरू करते हैं। क्या बच्चे की आंख से पानी या चिपचिपा मवाद आता है? नहीं आता है। ठीक है। क्या बच्चा रोशनी में आंख बंद करता है या मुंह फेरता है? हाँ, कभी कभी करता है। समझ गए। क्या आंख की पुतली में सफेद रंग या दाग दिखा है? हाँ, मैंने कभी कभी तो देखा है। ठीक है। क्या आंख के आसपास सूजन या लाली है? हाँ, थोड़ा सा है। जी। क्या बच्चा दोनों आंखें पूरी तरह खोलता है? हाँ, पूरी तरह खोलता है। समझ गए। क्या बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था? हाँ, प्रीमेच्योर हुआ था। और जन्म के समय वजन कितना था? अंडर एज था, मुझे नहीं पता है। ठीक है। अब मैं आंखों की जांच शुरू करती हूँ। अब स्टेप 1, भेंगपन और पलके झुकना जांच। क्या आप मुझे बच्चे की आंखें दिखा सकती हैं? मैं एनालिसिस कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। अब स्टेप 3, फ्लैश फोटो से सफेद रोशनी जांच। क्या आप फ्लैश फोटो ले सकती हैं? हाँ, मैं ले रहा हूँ। मैं एनालिसिस कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। अब स्टेप 4, कॉर्निया की सफाई जांच। कृपया आंखें दिखाएं। हुआ? अभी जांच चल रही है, थोड़ा सा और इंतजार करें। अब स्टेप 4, कॉर्निया की सफाई जांच। कृपया आंखें दिखाएं। हुआ?
So at this stage, all these models are running behind the scene. So the monitoring, those are running at this time. So these are the background processes. Those models are running, and all this images is the images are taken by this Android app, and the vision agents orchestrates everything. The role flow models are called in local. They actually analyze the images, and all those images are passed to Gemini Live, and Gemini Live makes access, and it is also saved in between. As save call is run, and the LLM actually saves the data in the vision agents actually saves the data, and this periodic steps it goes through. So let's see how that goes. Assessment हुआ? अभी जांच चल रही है, थोड़ा सा और इंतजार करें. अब स्टेप 5 पैरेलल जांच. कृपया आंखें दिखाएं. So the role flow models are running. So since the role flow models are running, the best image is taken. मैं एनालिसिस कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए. अब स्टेप 6 आंख के आसपास सूजन जांच. कृपया आंखें दिखाएं. This is how the conversation is going. The conversation is going. The agent is actually having the conversation here live. We can see. If I ask, हुआ assessment? You can see this is how this conversation is going. चल रही है, थोड़ा सा और इंतजार करें. Yeah. अब स्टेप 6 आंख के आसपास सूजन जांच. कृपया आंखें दिखाएं. So I am acting as Asha worker here. So this is how an Asha worker will take the phone and help assess the eye of an household. So this is the use case. We can use AI to assess the eye, since Asha worker goes door to door in every household. And since every household worker has Android phone, so this is how that Android phone can be a very much useful tool, so we can assess the eye disease earlier using vision AI models. What? जांच चल रहा है क्या? ये जांच चल रही है, थोड़ा सा और इंतजार करें. मैं एनालिसिस कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए. अब जांच पूरी हो गई है. इस AI बेस्ड स्क्रीनिंग में कुछ संकेत मिले हैं. बेहतर निदान के लिए कृपया किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आंखों के डॉक्टर से मिले. मैं निष्कर्ष सहेज रही हूँ. ये AI बेस्ड स्क्रीनिंग है, निदान नहीं. कृपया किसी भी फाइंडिंग के लिए PHC या आंखों के डॉक्टर से मिले. आप अब कॉल खत्म कर सकते हैं. क्या मैं कॉल खत्म कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कॉल खत्म कर सकते हैं. Thank you. धन्यवाद. So you see, this is how the AI assessment has gone. So all the pauses, you can see all the pauses between, there may be 1 minute of pause in between, and I was asking hua kya. So I was actually invoking whether it has been done. So in that between the agent, the vision agent has, and my entire workflow was taking best images, 2-3 images, and all those best 2-3 images is actually passed to the workflow models. All those models I'm actually using for eye disease. So those images are passed to the models, and those models are running locally in the machine. So they are actually analyzing
And since the analysis was actually happening, so the agent was already paused and all the analysis was done, and all the data passed to a Gemini Live, and she was actually getting the data from the analysis of these raw flow models. So this is how all these steps, you can see there are a few steps, there are a few diseases the model has actually gone through to assess, and then all the data, the Gemini Live has got all the data, all the pinpoint from all various kind of disease context, and then she analyzes it, and finally she suggests whether there is an issue or not. So this is how we actually assess.